What is tool and die making? So tool and die making is a very specialized branch that's into mechanical engineering, where the manufacturing of the application is used for manufacturing press tools, jigs fixtures, molds, and dies. That is for use in the production of all these parts. Example to look at is almost all the plastic parts are involved by injection molds, and all the sheet metal parts needs to be made by the press tools. एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो कार पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल बॉनेट्स है, आपका डैशबोर्ड रहेगा, लैपटॉप का पार्ट है, मोबाइल फोन का पार्ट है, बाइक का पार्ट्स है. So can you get all these parts require sheet metal and injection molds? That is what is tool and die making is. So now just look at, अगर हम लोग कार का पार्ट्स देखते हैं, can you see all these parts? This is again a sheet metal, this is sheet metal, this is sheet metal, this is sheet metal. All these parts are into sheet metal parts. So any product you take, almost if you check any of the part, either it is plastic or it is sheet metal or it is aluminum. So one or the other part, all the parts if you look at, each part requires tool and die making. So can you see this is the bike part, what is being showing in the screen. I think everybody is able to see the screen. So where this is a computer part, this is again a sheet metal part used in maybe automobile or anywhere, all the sheet metal parts. I'm concentrating more in this session for sheet metal parts because we are looking at creating how the press tools are going to work out. Can you see all these parts? All parts are integrated either with sheet metal. So now let me proceed further. So what are the advantages of the tool design knowledge? So thorough knowledge of how the tool parts are actually manufactured. So tool design का knowledge के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. So first what we saw is what is the tool making and how the plastic components and the sheet metal parts are actually manufactured. Either it is from the injection mold or it is from the press. So now we are looking at what are the advantages of tool design knowledge. अगर आपको डिजाइन का नॉलेज है, प्रेस टूल डिजाइन या मोल्ड्स कैसे बनता है, उसका आपको एडवांटेजेस क्या है. तो फर्स्ट व्हाट आई एम सेइंग इज थोरो नॉलेज ऑफ हाउ द पार्ट्स आर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड. पार्ट कैसे बनता है उसका पूरा आपको नॉलेज आएगा. द सेकंड इज प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्किल्स गेट एक्सपांडेड. As an engineer, either we are involved in manufacturing or in design or maybe the product design or some industrial automation, right? तो अगर हम लोग देखते हैं टूल डिजाइन का नॉलेज है, प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट का स्किल आपका एक्सपांशन होगा. एंड द थर्ड वन व्हाट आई एम सेइंग इज लेस फ्लॉज इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड R&D एक्टिविटी व्हाइल प्रूविंग द प्रोडक्ट. अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो और आपको टूल डिजाइन का नॉलेज नहीं है, यू डोंट नो हाउ द पार्ट्स आर मेड, हाउ द डाई विल बी मेड. जब आपको मालूम नहीं है डाई कैसे बनता है, जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, देयर आर मोर चांसेस ऑफ एरर्स, देयर आर मोर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, देयर आर मोर चांसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन. So next is easy access to modify the product and also the development process. जब आप प्रोडक्ट डेवलप करते हो, आपको प्रोडक्ट अगर मॉडिफाई करना है तो आपको जब डाई डिजाइन का नॉलेज है, आप इजीली उसको कर सकते हो और आप इजीली डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टेबलाइज कर सकते हो, राइट? एंड आई एम सेइंग इट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड लेस रिजेक्शन. Yes, Abhi, somebody was saying that's increase in the productivity and the less rejections. The next is expansion of creative thinking. When you know how the dies are made, so you are also looking at how
your thinking will get expanded, because you will have to look at each and every operations. जब अगर कंपोनेंट बनाना है तो कौन सा डाई बनाना चाहिए, कितना स्टेज में होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी कैसे होना चाहिए, मुझे लेस मैन पावर कैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, डाई का क्वालिटी क्या होगा, डाई का लाइफ क्या होगा. सो ऑल दिस थिंकिंग इज पुट इन प्लेस so that you are thinking creative thinking is getting expanded. Of course you will be an asset to your own organization. तो अगर हम लोग एज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड देखते हैं, उसके अंदर अगर आपको टूल डिजाइन का एडवांटेज है, नॉलेज का, दैट्स एन एडवांटेज फॉर यू बीइंग एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द प्रेस टूल्स? सो इसमें से बहुत सारे लोग जो अभी इधर ऑलरेडी मीटिंग में है, कुछ लोगों को मालूम भी रहेगा कि प्रेस टूल्स क्या होती है और उसके अंदर कितने सारे टाइप्स. या सो वी आर कंडक्टिंग सो मेनी प्रोग्राम्स इन प्रेस टूल डिजाइन एंड डिजाइनिंग स्किल्स मेनली. तो उसमें से फर्स्ट प्रोग्राम होगा फाउंडेशन कोर्स. सो वी सॉ नाउ सो मेनी स्क्रीन्स. प्रेस टूल में कितने टाइप्स है, कैसे है, क्या बनाना पड़ेगा, कितने सारे ऑपरेशन है, ऑल दिस वी वर जस्ट लुकिंग इनटू, राइट. अगर हम लोग को ये सब सीखना है, इट्स अ वास्ट फील्ड. टूल एंड डाई मेकर इज almost 3 to 4 years program. So here we have brought everything into a conceptual based training where an engineer can get trained faster. Is everybody is following my whatever I am saying? So इसमें हम लोगों ने क्या किया है, पहले तो एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स बनाया है जहां पे यू विल नो द बेसिक्स. जस्ट अ मिनट. Yeah, so जहाँ पे you will know the basics of the program, basics of press tool making, how the calculations are done, how the operations are done. तो each tool का क्या क्या functionality होगा, अगर वो blanking है तो blanking क्यों बोलते हैं हम लोग, अगर piercing tool है तो piercing tool हम लोग क्यों बोलते हैं, what is a bending tool, how the construction of the tool is done, what is the materials used in making those tool parts. अगर आप डाई बना रहे हो तो डाई के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है ना. आई जस्ट नाउ शोड सम ड्राइंग्स विद यू. ईच पार्ट हैज गॉट अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ मटेरियल्स. कौन सा मटेरियल का सिलेक्शन होगा, वही मटेरियल क्यों सिलेक्शन करना चाहिए, ऑल दिस आर कवर्ड इन द फाउंडेशन प्रोग्राम. एंड ऑल्सो यू विल बी डूइंग बेसिक टूल डिजाइनिंग फॉर एनी ऑफ द पार्ट्स. इसमें ना सबसे एडवांटेज ये है कि this is a foundation in tool design program. Anytime access रहेगा, so you will have anytime access. So when you have anytime access, आपका जो constraint है, यार मुझे time नहीं है, मेरा काम है, मैं ऑफिस जाता हूँ, all this can be managed because you can learn in your own free time. आप आपका free time में आप सीख सकते हो, because you will get the added full bunch of training videos fully, and also you will have support from our side. One-to-one support rahega whenever you have any of the doubts. See, I am having more than 30 years of experience in press tool design and development. I will be working with each one of you to support, to enhance your skills. It requires only one thing. I am committing to your future, but are you committing to your future? That is really, really important and critical. That's where your skills can be expanded. So now just give you, वहाँ पे क्या क्या होगा, डिटेल्ड सेशंस रहेगा, टाइप्स ऑफ टूल्स रहेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस रहेगा, फॉर्मूलाज कौन सा यूज होगा, एंड देन सैंपल टूल डिजाइन, एंड देन यू विल हैव support for design practice. We will be practicing, I'll be practicing with you. You have any queries, any doubts, I can be a mentor for you for training in tool design practically. So let me now just look at some basic type of the press tools. So first is blanking tool, second is piercing tool, the third is guide plate tool, fourth is strip guide tool,
Another one is bending tool. Next is forming tool. Next is draw tool, progressive tool, combination tool, and there are n number of some more tools which are in the list. I have just listed out few of the tools, and these are the types of the press tools. So that is what we have listed it here. So this will give you approximately यार क्या क्या operation हो सकता है. So just give, let me give you in one line what blanking tool is. So blanking tool होता क्या है actually? You need any part from the press, from the sheet metal. So if it is a just plain blank part, so the first tool what we are making is blanking tool. That is one of the simplest tool. And you need a piercing tool. So that piercing tool is used for making any of the holes or any small profiles in the sheet metal part. That is called as piercing tool. That is the secondary operation in the part. It's not the primary operation. Whereas blanking tool is a primary operation to cut the blank from the sheet or a strip. The third is, I am talking about guide plate tool. This is the simplest tool in all the type of tools what has been listed here. अगर हम लोग ये पूरा का पूरा लिस्ट देखते हैं, इसमें से एकदम से सिंपल वाला टूल है गाइड प्लेट टूल. The next is strip guide tool. This both are almost same, but this is having an extra stripper plate. So you will know the details of each and every tool in our further sessions. The next is bending tool. Suppose you need any bending on any of the metal part. So the bending tool is used. It may be V bending tool, it may be U bending tool, or it may be L shape. Then there are n number of shapes in the again bending tools. And then there is a forming tool. So what is forming tool? Forming tool, I am just giving you an example of, for example, you can see the car bonnet on the front jo bonnet hai. So that is the total forming. It's not bending. Bending is you're actually bending that to a certain angle. Whereas the bonnet is done with the forming. It is just changing the shape of the sheet. So that's a forming tool. You can check with any of the components or any of the parts. You can see everywhere there are more details or which type of tool you want to go ahead. वो आप decide कर सकते हो. So let me go to the next. So next is a draw tool. Consider you need to make a cup or you need to make a tubular part from a sheet metal or from a sheet. So that is called as a draw tool. So next coming is प्रोग्रेसिव टूल. सो हम लोग यहां से लेके यहां तक जो हम लोग ने देखा ये सब सिंगल स्टेज टूल्स है. दे आर ऑल सिंगल स्टेज टूल्स. ईच टूल मेक्स ओनली वन ऑफ द ऑपरेशन. ब्लैंकिंग टूल इज वन ऑपरेशन, पियर्सिंग टूल इज अनदर ऑपरेशन, बेंडिंग टूल इज अनदर ऑपरेशन, फॉर्मिंग टूल इज अनदर ऑपरेशन. वेयर वी आर लुकिंग एट प्रोग्रेसिव टूल is a stage tools all combined together and put it into one of the die. Are you able to understand? For example, there is a blanking, there is piercing, there might be bending, or there might be another bending, and then there is a cutting up. So all these operations are synchronized and put into a same single tool. That becomes a progressive tool. Progressive tool designing is one of the critical skill to be developed. If you look at many of the organizations, people are able to make single stage tools because they are much simpler. Still it requires skills, but still it is simpler. But when you are going for a progressive tool, it's very, very critical in design because that's very critical part. So we will explain or we will look into more details in our further sessions. So next is combination tool. Combination means name itself says combining one or two operations, that becomes a combination tool. For example, you need blanking and piercing. Simple blank है और उसके अंदर एक छोटा सा hole है. So that is a stage where in one stage both the operation combined. I am going to the next screen. हाँ, जब ये डाइज हम लोग बना रहे तो उसका प्रोडक्शन होगा कैसे? So this is one of the press photograph I have put it here. So this is the mechanical press we call. This is
the 30-ton C-type power press machine. So this type of presses are there. So again, there are tonnages. There you will get small presses, you will get very big presses. Then there is a mechanical press, there is pneumatic press, and then there is hydraulic press. That depends on the operation required and the tonnage required. For example, you are making a small part that may not need a more pressure. So you may use a pneumatic press, which is a very small. Suppose if I want to make a bonnet of a car, I may go for a very big press, maybe 1,000 ton hydraulic press. I don't know. It depends on the calculations, how the dice is designed, and how big the part is. I'm showing it one of the mechanical press. It is just for your understanding. I'm doing it. So when we make a tool, the press tool is loaded into this machine. So I can just on the screen, can you all see in this space, the press tool is being loaded and the operation is done. So then again, there are number of parts in the press. So that is again a different. So we don't get into details as of now of the press. Okay. Going to the next screen. So we were talking about the basic operations. See, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो what I have written is, this is the workpiece. I have written this as a workpiece. So this I have given two examples here. One is blanking operation and another one is piercing operation. How the strip will look like. अगर हम लोग मटेरियल के अंदर से जब पार्ट कट करते हैं, वो दिखता कैसा है, वो हम लोग देख रहे हैं. So this is the strip. So this is the total sheet metal part. Means इमेजिन करो आपने एक बड़ा शीट लिया, उसको स्ट्रिप्स में कट किया. जो स्ट्रिप में आपने कट किया, सो नाउ यू हैव डन द ऑपरेशन ऑफ ब्लैंकिंग. ओके, दिस इज द ब्लैंकिंग ऑपरेशन. इसके अंदर से जो पार्ट बाहर आएगा, दैट इज द पार्ट एक्चुअली यू आर यूजिंग. मीन दैट इज द पार्ट रिक्वायर्ड. दैट इज व्हाट एक्चुअली यू आर मैन्युफैक्चरिंग. सो दिस पार्ट इज कट फ्रॉम दिस शीट. सो हियर इन द other side where piercing is written, this is the strip and this part we are doing the piercing operation. So इसके अंदर वाला जो part है, that becomes the scrap. So in the sheet, when you are doing a blanking operation, so this becomes the part which you are actually using. And if this is the part and you are doing this piercing operation, the part inside of this, that is actually the scrap. So we have mentioned here, this is the scrap and this side, this is the scrap inside one. This becomes the workplace here and this is the workpiece here. Clear? I'm going to the next section. So we are looking at basic blank part. अभी जो हम लोगों ने ऑपरेशंस देखा, so मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कंसिडर हम लोग को ये फिनिश पार्ट चाहिए. आई नॉट मेंशन्ड एनी डायमेंशंस, दिस इज जस्ट टू रेफर. अगर ये पार्ट हम लोग को चाहिए, दिस इज द फिनिश पार्ट, बराबर. ये हम लोग को फिनिश पार्ट चाहिए. ये शीट मेटल का स्ट्रिप है. इमेजिन करो एक बड़ा शीट आता है. देयर आर स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ शीट्स अवेलेबल इन द मार्केट. फ्रॉम दैट शीट यू आर एक्चुअली कटिंग द स्ट्रिप. ये हम लोग स्ट्रिप बना रहे हैं, राइट. सो ये स्ट्रिप में से जब आपका, तो ये जो है दिस इज द ब्लैंक. अगर हम लोग ब्लैंकिंग टूल बना रहे हैं, तो ये ब्लैंकिंग का जो ऑपरेशन होगा, ये स्ट्रिप के अंदर आप ये कट कर रहे हो, ऐसा कट करते हुए जाएगा. एंड देन दिस बिकम्स द फिनिश पार्ट एंड दिस इज द स्क्रैप. You can also do some more operations here because still there is material left out. So now we are looking at basic guide plate tool. So जैसे मैंने आपसे बात कर रहा था ना, we said simplest tool is the guide plate tool. So now we are looking at what guide plate tool is. उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसका डिजाइन कैसे रहेगा. So what we are looking at is
फर्स्ट लेट अस लुक, ये टॉप व्यू है गाइड प्लेट टूल का और ये फ्रंट व्यू है। अगर ये अपना टॉप व्यू है, सो दिस प्लेट इज अ बॉटम प्लेट। तो ये प्लेट जो है ये बॉटम प्लेट है, ये डाई प्लेट है। सी, आप अभी सिर्फ कैप्चर कर सकते हो, आपको पूरा डिटेल डिजाइनिंग शायद इतने में समझ में नहीं आएगा। If you want to get into more depth, there are more programs where I am conducting a lot of programs. Our team is managing all that. In that, you will be able to see in-depth details, and we will be working with you for you expanding your designing skills of press tool making or press tool designing. तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स देख लेते हैं। तो ये होगा बॉटम प्लेट, ये होगा डाई प्लेट, this is the guide plate, this is the punch, and here we have put as a double, and here it is a fastening screw. So all these three plates together to fasten the bolts are used. So there are 4 positions given here. ये bolting होगा, ये पूरा का पूरा तीनों प्लेट्स, दोनों प्लेट्स को स्टैक करता है and put it on the bottom side, right? And this tool is guided in this plate. This punch is a cutting punch. It is guided in this plate, and here there is a cutting operation taking place. So we will get into more details about designing. So how many of you think tool designs will add the value to you? कितने लोगों को ये लगता है कि टूल डिजाइन का स्किल आपको वैल्यू ऐड करेगा? So how much time are you willing to invest in learning these skills? कितने लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए? टाइम डालना चाहते हो आप? So मुझे आप ये बताओ, what will come in your way to acquire these skills? आपको क्या स्टॉप करेगा अगर आप करना चाहते हो तो? क्या स्टॉप आ सकता है? So do you think it will add value to enhance your income as an engineer? अगर ये नॉलेज आपको है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इससे आपका जो भी इनकम है उसमें there is going to be increase? So as you all understand, being an engineer, adding value to the skills, that's what will increase the. So now suppose if you get a support system with a systematic guidance, how will it be for you? अगर आपको सिस्टमेटिक गाइडेंस मिलेगा और एक सिस्टम मिलेगा जहां पे आप 1-to-1 ट्रेनिंग करते हुए जा सकते हो, आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दिस मोर? सो हाउ डू यू वांट टू इंक्रीज योर अर्निंग्स? आपको अर्निंग्स अगर इंक्रीज करना है तो आप कैसे करोगे? हाउ डू यू इंक्रीज योर इनकम? कैसे, क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करने के लिए? करना चाहता हूं, इफ यू वांट टू रियली एनहांस योर स्किल्स, ओके, आपका कुछ गोल रहता है कि मुझे ये करना है, हाउ आर यू गोइंग टू रीच देयर? उधर पहुंचेंगे कैसे आप? तो अगर हम लोग बात करते हैं, सो जो भी पहुंचना चाहते हैं हम लोग, जो लेवल पे हम लोग पहुंचना चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल बाय 2 चीजें आप कर सकते हो। एक है जो आपको ऑलरेडी मालूम है वो तो आप कर ही सकते हो। दूसरा, अगर वो लेवल पे पहुंचना है, आपको जो मालूम नहीं है वो तो आप कैसे करोगे? So you need somebody to guide to that path to reach where you want to reach. In engineering, tool making is one of the critical skills. You can take
any number of companies. You can look at any companies. Either they are in plastics or in sheet metal or in any assembly, any product. Wherever you go, tool making is there. There are only few organizations or colleges who are actually teaching tool making. So why we are doing this? That is because this is the only thing which will enhance the skills of engineers. जो एक्चुअली हार्डकोर जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसका स्किल्स ऐड करने के लिए टूल मेकिंग का स्किल्स हम लोग ट्रेन कर रहे हैं लोगों को. So now let me just give you an answer. Do you want to increase your earning? Earning is equal to what? Earning is equal to learning. आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपका वैल्यू. To enroll, you can contact on this number and also the email ID. You can start with the foundation program and all other programs that will enhance your skills.